Hello everyone, welcome to my YouTube channel Basic Studies. I am Akanksha. Let's be talk about nutrition. Nutrition. Before start this, tell us talk about daily life. अगर हम डेली लाइफ की बात करें तो डेली लाइफ में हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसे कि खेलना, कूदना, चलना, इवन पढ़ना ही क्यों ना हो। तो इन सभी एक्टिविटीज़ को करने के लिए हमें एनर्जी की आवश्यकता होती है। और ये एनर्जी आती कहाँ से है? ये एनर्जी आती है फूड से। फूड में होते हैं न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स आर सबस्टेंस दैट प्रोवाइड नरिशमेंट essential for maintenance of life for growth. For example, carbohydrate, fat, vitamins, protein, minerals, water. So, these are essential for a proper growth and development of body. इन सभी न्यूट्रिएंट से हमारी बॉडी को प्रॉपर ग्रोथ मिलता है। अगर हम बात करें न्यूट्रिशन की, तो द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन कंज्यूमिंग फूड एंड यूटिलाइजिंग इट इज़ नोन एज न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन मीन्स वह प्रक्रिया जिसमें हम भोजन को लेते हैं और उसका उपयोग करते हैं, पोषण कहलाता है। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन. On the basis of obtaining and utilizing food, there are two types. First, autotrophic modes of nutrition, and second, heterotrophic modes of nutrition. First, we talk about autotrophic modes of nutrition. Autotrophic comes from two words, auto and trophic. Auto means होता है self and trophic means होता है feed. It can be defined as when an organism prepares their own food and does not depend on any other organism is called autotrophic nutrition. For example, green plants, algae. अगर इसके पॉइंट्स ऑफ व्यू की बात करें तो फर्स्ट पॉइंट इज an organism that follow the autotrophic modes of nutrition is called autotrophs. And second, autotrophs have chlorophyll pigment, या फिर जिसे हम ग्रीन पिगमेंट के नाम से भी जानते हैं, by which they prepare their own food, जिसके द्वारा ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अगर थर्ड हम बात करें तो autotrophs are also called producers because they produce their own food. Let's we talk about types of autotrophic nutrition. There are two types of autotrophic nutrition. First, photosynthesis and second, chemosynthesis. Photosynthesis प्रोसेस में क्लोरोफिल पिगमेंट जो सनलाइट को ट्रैप्ड करता है और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करके फूड मैन्युफैक्चरिंग में हेल्प करता है। इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। हम बात करें कीमोसिंथेसिस की। कीमो मीन्स होता है केमिकल। इसमें कुछ बैक्टीरिया एंड एल्गी केमिकल सिंथेसिस करके अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक, photosynthesis is followed by all green plants, while chemosynthesis is followed by some non-green bacteria and sulfur bacteria. Second, we talk about heterotrophic modes of nutrition. Heterotrophic is derived from two words, hetero and trophic. हेट्रो मीन्स होता है अदर्स एंड ट्रॉफिक मीन्स होता है फीड. इट कैन डिफाइन एज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म डिपेंड अपॉन अनदर एनिमल्स फॉर फूड इज कॉल्ड heterotrophic nutrition. An organism that follow the heterotrophic modes of nutrition is called heterotrophs.
The method of obtaining nutrition varies with each animal based on the food it eats, so an animal can be classified as herbivorous, carnivorous, and omnivorous. A herbivorous only eats green plants, and a carnivorous only feeds another animals, and a omnivorous eat plants as well as animals. Types of heterotrophic nutrition. There are three types of heterotrophic nutrition. First, holozoic nutrition. Second, parasitic nutrition. And third, saprotrophic nutrition. First, holozoic nutrition. Holo means होता है whole and zoikos means होता है animals. It is the method in which animal taking in the complex food, for example, human beings, lion, deer, etc. Second is parasitic nutrition. Parasite obtain its food from other living organisms without killing them. Living organism called its host. When a parasite is present inside the body of the host, it is known as endoparasite. For example, hookworm and tapeworm lives in intestines such as human, cow, pigs and obtain nutrition from the digested food in intestine. While some parasites such as ticks, mites and leeches attach themselves to the outside of host body, suck the blood of the host. Such organisms are known as ectoparasites. And third is saprotrophic nutrition, the mode of nutrition in which an organism obtain food from non-living organic matter is known as saprotrophic nutrition. The non-living organic matter include dead and decaying plants and animals, and bacteria causing decomposition of dead animals and plant. The molds growing on bread are some examples of saprotrophs.